لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر عيد الأضحى عيد مبارك الله 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 أكبر we give what we love for Allah Eid al-Adha heart surrender to sacrifice we remember I trust what he wrote I trust what he give I let go with sabr I let go with sabr I let go with sabr Allahu 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 Akbar we give what we love for Allah a father's I dream, a sunset I believe. When love was put to tell it, choose Allah or everything. Not just meat, not just a day, not just clothes we wear and pray. It's the heart that loves you say. I let go with sabr, I let go with sabr, I let go with sabr. If you ask me to let go, then I know you're holding me. If you test me with the pain, then your mercy molding me. Ya Allah, accept from us every tear and sacrifice, every tear and sacrifice, every tear and sacrifice. Allahu 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 Akbar. Eid al-Adha, Eid Mubarak. Allahu 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 Akbar. We give what we love for Allah. Eid al-Adha, heart surrender to sacrifice. We remember. I trust what he wrote. I trust what he give. I let go with sabr. I let go with sabr. I let go with sabr. Take my pride, take my fear. Take the dunya I hold dear. Take my plans, take control. Place your light inside my soul. Ibrahim trusted you. Ismail trusted you. So when my tears come close, Ya Allah, accept from us every parent sacrifice, every parent sacrifice, every parent sacrifice. Allahu Allahu
give what we love for Allah. हम और पूरी DPS की टीम से आप सबको ईद मुबारक. Eid al-Adha is celebrated all over the world with joy and happiness. Eid al-Adha is one of the most important festivals of Muslims. Eid al-Adha is also called the sacrifice of festivals. This Eid reminds us of the sacrifice of Prophet Ibrahim. People wear new clothes, enjoy foods and Eid and gifts. Eid al-Adha teaches the sacrifice and kindness. Assalamualaikum everyone. Neem Nahiliya from class UKG. The day of Eid al-Adha is very important for every Muslim because on this day sacrifice in the way of Allah. Thank you. Taqabbalallahu minna wa minkum salawul amal. May Allah accept from us and from you our righteous deeds. तो आज हम आपके सामने ईद उल अजहा का खूबसूरत पैगाम पेश करने जा रहे हैं. ईद सिर्फ खुशियों का त्योहार नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम है. तो आइए मिलकर. बहुत पसंद है. मुझे नए कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है. मुझे ईदी लेना बहुत अच्छा लगता है और फैमिली के साथ वक्त गुजारना भी. घर जाके कुर्बानी का गोश्त बांटता हूँ ताकि सब लोग ईद की खुशियों में शामिल हो सके. मुझे बिरयानी और मिठाई पसंद है. मैं पूरी ईद एंजॉय करता हूँ. हर घर में खुशियाँ थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन ईद का असल पैगाम अभी बाकी था. ईद हमें शेयरिंग सिखाती है, खुशियाँ सब में बांटना सिखाती है. ईद हमें कुर्बानी सिखाती है. ईद हमें इंसानियत सिखाती है. ईद हमें दूसरों की मदद करना सिखाती है. ना सिर्फ नए कपड़े, ना सिर्फ मिठाई. ईद है प्यार बांटना, ना सिर्फ अपनी खुशी, सबकी खुशी. यही है ईद. कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपने गुस्से की भी होनी चाहिए और अपने घमंड की भी. ईद हमें मोहब्बत सिखाती है, सबके साथ प्यार से रहना सिखाती है. Eid al-Adha is not just a festival. It is a powerful reminder of sacrifice, faith, devotion, obedience, and complete trust in Allah. It teaches Muslims that true success lies in the following the command of Allah with sacrifice and sincerity. Now, a question arises here: why Eid al-Adha is celebrated? Eid al-Adha is celebrated in the memory of great sacrifice of Prophet Ibrahim alayhi salam and his beloved son Prophet Ismail alayhi salam. According to Islamic teachings, Prophet Ibrahim alayhi salam saw in his dream that Allah commanded him to sacrifice his son. Although it was extremely a difficult test, but Prophet Ibrahim alayhi salam didn't hesitate because of his deep love and obedience towards Allah. Prophet Ismail alayhi salam also showed remarkable faith and willingly accepted the command of Allah. ईद आने वाली है, कुर्बानी करवा दे, कुर्बानी करवा दे. प्यारे बाबा मुझको प्लीज बकरा दिला दे, बकरा दिला दे. ईद आने वाली है, ईद आने वाली है, कुर्बानी करवा दे, कुर्बानी करवा दे. बकरे को मैं लाऊंगी, बकरे को नहलाऊंगी, बकरे को नहला के उस पे मेहंदी भी लगाऊंगी, मेहंदी से लिखूंगी उस पे ईद मुबारक. प्यारे बाबा प्यारी मम्मा ईद मुबारक. सबको 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 बकरा ईद मुबारक. प्यारे मुसलमानों तुमको ईद मुबारक. Students of Dawoodiya Public School, we wish you and your family a joyful and blessed Eid. Taqabbalallahu minna wa minkum Eidul Mubarak alayna wa alaykum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahil hamd. Eid Mubarak. Somebody says Eid al-Adha, we often think about new clothes, food, and enjoyment. But it's not only about that. It's also about remembering the sacrifices of our Prophet Ibrahim alayhi salam. It's also spreading love among our beloved ones. It's also about remembering brotherhood and kindness. All wishing you all a very happy Eid Mubarak. Eid al-Adha is the festival of happiness and blessing. We celebrate it today, families and
Friends, on Eid we wear new clothes of Eid praise. Eid teaches us love, kindness and greed to the Allah. Eid का दिन आया है, खुशियाँ साथ लाया है, हर चीज़ मुस्कुराया है, दिल ने सुकून पाया है. Thank you. The night's clear. This is because Eid al-Adha is near. Some occasions are celebrated, but Eid al-Adha is felt deeply in our hearts. It teaches us the purest form of love is sacrifices, and the strongest souls are those who choose kindness, even their life is better. Welcome everyone. Wish you a happy Eid Mubarak. Bakrid is also known as Eid al-Adha. It's an important festival for Muslims. It's celebrated in memory of Prophet Ibrahim's sacrifice. The festival falls on 10th day of Islamic month of Dhul-Hajj. People wear new clothes and go to mosque to offer their special prayers. Animals like cow, goat, sheep are sacrificed on this day. The meat is divided into 3 parts. One for poor, relatives and families. Bakrid teaches us about sacrifice, kindness and brotherhood. Thank you. Assalamualaikum to everyone. Today I am going to speak about Eid al-Adha. Eid al-Adha is one of the most important festivals of Muslims. This festival is also called the festival of sacrifice. This holy festival reminds us of the Ibrahim alayhi salam was ready to sacrifice his son for the sake of Allah. Eid al-Adha is celebrated on the 10th day of Dhul-Hajj. On this day, people offer special prayers in Eidgah. People greet each other with Eid Mubarak. The main tradition of Eid al-Adha is Qurban. Neither the flesh nor the blood of your sacrifices reaches Allah, but it is the righteous motto underlying them that reaches Allah on Eid al-Adha, wishing that your sacrifices are appreciated and your prayers are answered by the Almighty Allah. Have a blessed Eid al-Adha. सिर्फ जानवर की नहीं बल्कि अपनी बुरी आदतों की भी होनी चाहिए. It teaches love, sacrifice and humanity. Assalamu alaikum to one and all present here. Today I Nafia Ashik going to speak a few words about Eid al-Adha, one of the most important festival of Muslims. It's also called the festival of sacrifices. Allah Ta'ala says in the Quran, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ. It reminds us the great sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam and Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam, and he shows a complete faith and obedience. This teaches a true Muslim always trust Allah subhanahu wa ta'ala. ईद उल अजहा हमें जानवर की कुर्बानी के साथ साथ अपने झूठ, नफरत और गुस्से की कुर्बानी देना भी सिखाता है. ईद उल अजहा reminds us the great sacrifice of Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam and Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam. Hello everyone, my name is Haida Khan and today my topic is Eid al-Adha. Eid is a Muslim festival. Eid al-Adha is celebrated on 10th of July. Muslims sacrifice animals. People wear new clothes, they go to the mosque. People offer special prayers. Families make tasty food. Children get easy and gifted. Eid brings love and joy. I like Eid very much. Thank you. बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा बना बस अल्लाह के लिए है, जो जिसने हमें पैदा किया है. चांद रात की रौनक, बकरी की आवाज, कुर्बानी का जज्बा और अपनों के साथ, यही तो है ईद उल अधा की बात. ईद उल अधा is not just about कुर्बानी, it's about surrendering our ego, sharing our blessings and remembering Prophet Ibrahim's unwavering faith. He was ready to sacrifice what he loved the most just for Allah's command. Hazrat Ibrahim alayhi salam अल्लाह के हुक्म पर अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करने के लिए तैयार थे. यही ईमान की इंतहा है. कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, अपनी ख्वाहिशात की भी होती है. When Ibrahim alayhi salam moved the knife, a voice came from the sky. Stop, your task is completed. बाप और बेटे दोनों राजी हो गए अल्लाह की रजा पर. तभी तो कुर्बानी इबादत बन गई. With this prayer that Allah accepts all our sacrifices, a heartfelt Eid al-Adha Mubarak to all of you from DPS family. Warahmatullahi wabarakatuh. I'm Munazza Ashik from Standard 9th. I'm here to deliver some lines regarding Eid al-Adha. Eid al-Adha is not only about sacrificing animals, but also about sacrificing our own desires and egos. May we allow the Lord's sacrifices and submit ourselves to Allah's will. Happy Eid Mubarak by DPS family. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa kafa wa salaam ala ibadillazina istafa amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं आज आपके सामने ईद उल अजहा की कुछ बातें बोलना चाहती हूँ. हज़रत हुसैन बिन अली से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस भी शख्स ने अजर व सवाब और खुशदिली की नियत करके कुर्बानी की, उसके लिए आग रुकावट बन जाती है. ये ईद हमें हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की अजीम कुर्बानी याद दिलाती है. ये ईद हमें ये इतला देती है कि हमें कुर्बानी और सब्र हम दोनों करना चाहिए. ये हमें ये भी पैगाम देती है कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम.
आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए और हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लकल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। Everyone, today I am incredibly honored to speak about a very special day, Eid al-Adha, जिसे हम आम ज़बान में बकरा ईद भी कहते हैं। This festival is celebrated by Muslims all over the world. ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये उस अजीम कुर्बान की याद दिलाता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के राह पर दी थी। On this day, after offering the special Eid prayers, we perform the ritual of कुर्बानी। लेकिन ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला को ना तो कुर्बानी का गोश्त पहुँचाना चाहिए, ना तो खून। As the Quran says, the event is divided into 3 equal parts. एक हिस्सा घर वालों के लिए और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा हिस्सा गरीबों और मजदूरों के लिए। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। शुक्रिया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शाह मोहम्मद अफान दाऊदिया पब्लिक स्कूल से। खुशी मोहब्बत और बरकत आपके साथ रहे। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू। Alaikum. Eid Mubarak to each and everyone present here. Today, our hearts are filled with joy, gratitude, and devotion. We gather here to celebrate of legacy and faith and ultimate sacrifice. On this sacred day, we remember that true sacrifice is not in the act alone, but in the heart that surrenders to Allah's will without hesitation. Like Ibrahim alayhi salam, trust our reason, Allah of himself. May this Eid awaken within us a spirit of obedience, deepen our reliance on Allah, and remind us that every act of giving for His sake is chose for the beyond. What the eyes can see, may our homes be filled with barakah, our hearts with peace, and our actions with sincerity. May Allah accept our sacrifice, prayers, and good deeds. Thanks. ईद इंसानियत है, ईद कुर्बानी है, ईद उल अज़हा मुबारक। Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you. On behalf of the entire faculty at DPS, I extend my heartfelt greetings of Eid al-Adha to all of you. Eid al-Adha हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। Eid al-Adha is a beautiful reminder that reminds that nothing should be loved more than Allah, not your desires, not a person, and not this dunya. Eid al-Adha is not only a sacrifice of Prophet Ibrahim and Prophet Ismail. It's about us, our submission, and our devotion to the divine. May this Eid fill your heart with gratitude, fill your homes with blessings and joy. Wishing you a very happy Eid to you and your loved ones.